अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी, पाक चीन दोस्ती, सीपैक इसी दोस्ती की एक निशानी। सीपैक सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए अमन का गहवारा है। ग्वादर पोर्ट एक ऐसा पोर्ट जिससे हमारे हमसाया मुल्क जो कि हमसाया से ज़्यादा दुश्मन मुल्क जो है बनने की कोशिश करता है भारत, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ भारत को हुई ग्वादर पोर्ट के हवाले से, क्योंकि ग्वादर पोर्ट के डेवलप होने से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के जो चांसेस हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं बहुत सारे एवेन्यूज़ में ऑलरेडी काम चल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हवाले से मजीद और बढ़ा देता। साथ ही साथ जब 2007 से इसका इनॉग्रेशन हुआ ग्वादर पोर्ट का, तो हमारे हमसाए मुल्क ने हमारे लिए हर तरह से जाल बिछाने की कोशिशें की। अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी का मामला हो या फिर ओवरऑल किसी भी मामलात में पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जैसे कि FATF के ऊपर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक चीन दोस्ती की वजह से हम दिन ब दिन जो है सीपैक और ग्वादर पोर्ट में तरक्की कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो एवेन्यूज़ हैं वो हमारे ओपन होते जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे कि किन एवेन्यूज़ के ऊपर काम हो रहा है मजीद और कौन से एवेन्यूज़ जो हैं वो इसमें मजीद बेहतरी लेकर आएंगे। ओवरऑल जो ये मनसूबा है वो किस तरीके से खुशहाली लेकर आएगा पूरे खित्ते के हवाले से। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो में कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट तेज़ी की तरफ गामजन हो रहा है। जो ओवरऑल ट्रेन का सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ ही साथ सनतकारी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, टूरिज्म, कितने सारे एवेन्यूज़ के ऊपर जो है काम बढ़ रहा है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, मजीद वक्त नहीं लूँगी, अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस कराती चलूँगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जांग बाओजोंग, चेयरमैन COPH इन ग्वादर। अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे शहजाद कुरैशी साहब, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फोकस जो है सीपैक के हवाले से, ग्वादर के हवाले से इस वक्त है और उनकी जो भी खामियां इस वक्त जो अपोजिशन जमातें बात करी उस पर आज हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम इकॉनमी और ये तमाम तर मामलात के ऊपर बात करेंगे। आई फॉर्मली वेलकम बोथ ऑफ यू। So let's just start it. We'll start with the foreign policy. How do you see the foreign policy currently at the moment between the bilateral ties between Pakistan and China? Thank you very much. It is an honor to be on this show. All the Chinese, no matter they're young or old, we are very proud to have a strong partner like Pakistan. And the relationship between China and Pakistan is unique. And we, for the last decades, we have developed a unique relationship of trust, confidence to each other. And when this new government came into, and more progress have been made, and a lot of pending issues relevant to the CPEC, relevant to GWADAR development has been resolved. And we are very grateful, and we can see that the current government is very serious about development of Pakistan economy. And the Chinese government, the Chinese community, Chinese businessmen are very confident about the future of Pakistan economy. And now you see we are in the way of shifting some of Chinese industry to abroad because of many reasons. One of the major reasons is that you know that majority of the Chinese companies are facing a problem of labor shortage. And Pakistan, you see, is a country with 200 million population, and the majority of the people are under the age of 25. Okay. And so these people need employment chance, and the Chinese, in order to maintain their competitiveness of their products, they need a country like Pakistan. And also about this issue, advantage, the best thing is that we two countries, whether in the government level, especially in the grassroots people, we have confidence. We don't suspect each other, and this is the. I do believe that with this kind of atmosphere,
more and more closer business cooperation will be developed between Pakistan and China. Okay, शहजाद कुरैशी साहब, जिस तरह आपने बात सुनी, सर कह रहे हैं कि सेटिस्फाई हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं इस हुकूमत से, इस दौरे हुकूमत में तेज़ी से काम चल रहा है ग्वादर पोर्ट CPEC के हवाले से, और इकॉनमी के हवाले से भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सीरियस दिखाई देती है, लेकिन अपोजिशन जमातें जिस तरह आप लोग के ऊपर क्रिटिसाइज़ करती हैं वो तो इसके बिल्कुल बरक्स चेहरा दिखाती हैं, और वो जो हमारी टेम्प्रेरी चीज़ें होती हैं जिस तरह इन्फ्लेशन, उम्मीद करते हैं विल कम ओवर द इन्फ्लेशन एंड अदर इश्यूज एज वेल, लेकिन वो उस चीज़ों को ज़्यादा फोकस करती हैं. क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये CPEC जो है ना ये PTI का है, ना ये पीपल्स पार्टी का है, ना ये नून लीग का है. ये एक आप समझ लें कि पाकिस्तानियों का जो एक पाकिस्तान का एक ड्रीम था, जो एक पाकिस्तान को एक आगे लेके जाने के लिए जो एक सिमत तय हुई है, ये इसमें जाने इंशाल्लाह. और अगर मैं ये समझता हूँ कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बालातर होके इसको सिर्फ मुल्क कौम के मफाद में सोचना चाहिए. इसमें जो कॉरिडोर्स वगैरह बन रहे हैं, हाईवेज बन रही हैं, नेटवर्किंग हो रही है, रोड्स बन रहे हैं, कराची टू पेशावर जो आपने देखा है पूरा ML1 पूरा एक ट्रैक बन रहा है, चीज़ें बन रही हैं, तो ये अवाम का फ़ायदा है. इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये सोचना है कि इससे अवाम को फ़ायदा होगा. और चाइना ने जो हम पे एतमाद किया है, जो पाक चाइना फ्रेंडशिप है जो कि इतने सालों से चल रही है, और चाहे कोई भी दौर हो, चाहे वो हमारा पुराने दौर आप ले लें, या भुट्टो साहब का दौर हो, या अयूब खान का दौर हो, या ये दौर हो, तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की मफाद में कि इससे मुल्क को हमारे क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें ये सोचना चाहिए. और पिछले कुछ महीनों से अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए, एक ख़ास किस्म की मुहिम सोशल मीडिया पे शुरू की गई कि, और इसको आप ये समझ लें कि इसकी बदनामी का गया वो एक फॉरेन एजेंडा है. आपको ये बात पता है कि बहुत सारे ममालिक ये नहीं चाहते हैं. अगर आप हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं, दुश्मन तो क्या, जो हमारे दोस्त का भी किरदार अदा करते हैं, लेकिन वो दुश्मन है हमारे, जो खुल के सामने नहीं आते, वो सब खुश नहीं है पाकिस्तान से, क्योंकि इसमें पूरा पाकिस्तान के लिए एक कहना है पाकिस्तान का फेस ही चेंज होने जा रहा है. मैंने आपसे कहा ना कि इसमें इतनी चीजें, हाईवेज के नेटवर्क्स हैं, आप मुझे ये बताएं जिस तेजी से यहाँ कॉरिडोर्स बन रहे हैं, हाईवेज नेटवर्क बन रहे हैं, बलोचिस्तान से कराची, ग्वादर से कराची, आप देखें ना कि बिल्कुल हम एक, वो कहना चाहिए ना कि वाकई जो एक 21वीं सदी का जो हमने सोचा था, एक ख्वाब सोचा था कि दुनिया बिल्कुल सुकड़ के एक ग्लोबल विलेज बन जाएगी, तो पाकिस्तान बिल्कुल एक करीब होने के लिए जा रहा है. मैं ये समझता हूँ कि इसको सियासत की नजर ये नहीं होना चाहिए, सियासत की नजर ना करें. जो भी चीजें हों इस पे अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि बाकायदा तरीके से एक मुहिम चलाएगी कि ये रुक गया है. अच्छा, यहाँ पे ये एग्जैक्टली यही बात जो है कि रुक गया है, ये वाली जो कॉन्स्पिरेसी करने की जो कोशिश की गई है, यानी ये आपको कम्प्लीटली फॉरेन एजेंडा ही लग रहा है. ऑब्वियसली फॉरेन एजेंडा लग रहा है. कोई चीज अगर मैं कहूंगा कि हाईवे बन रही है तो हाईवे नजर आएगी ना. ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाईवे में मैं बैठ के कंप्यूटर पे या वर्चुअल बना रहा हूँ. मतलब कहने की बात है ये कि सब कुछ हो रहा था, काम उसी रफ्तार से हो रहा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक खास प्रोपेगेंडे के तहत, और ये मैं आपको बताऊं, चाइना के जो आपके एम्बेसडर हैं उन्होंने भी बारहा ये कहा कि पिछली गवर्नमेंट भी और ये गवर्नमेंट भी, देखिए हमें कोई इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी है. CPEC की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है, CPEC की कामयाबी पाकिस्तानियों की कामयाबी है, CPEC की कामयाबी पाक चाइना दोस्ती की कामयाबी है. और आप ये समझ लें अगर हमने इस टाइमलाइन को मीट कर लिया जो कि हमने रखी हुई है, आप ये देखें ना कितने $बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, आपके रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी सेक्टर है. यही जानूंगी जोंग पचोंग से जानूंगी कि क्या इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि ऑब्वियसली सदाकत तो नहीं है, लेकिन इसको ये क्लैरिफाई करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि किस तरीके से जो है ये एक रूमर चलता आया कि CPEC के हवाले से जो है काम रुक गया है. सो आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑन, there was a rumor that there's no more development and the work is not in progress regarding CPEC, GWADAR Port and OBOR. So that was particularly a rumor from our neighborhood and they tried to spread it out. So I just want to hear from you on this, but before that I need to go on break and we'll just come shortly and we'll ask you on that right after a short break. Stay with us on Inside the News. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैंने सवाल किया था मिस्टर चोंग पचोंग से कि आखिर वो क्या इस बारे में बताना चाहेंगे हमें कि किस तरीके से ये रूमर्स फैलते आए कि CPEC के वाले से या ग्वादर पोर्ट के वाले से काम जो है रुक गए हैं, उस पर वो जो है हमें क्लैरिटी देंगे. यस सर.
Thank you, madam. You're very polite, to be honest. And instead of seeing some rumors, as a matter of fact, some evil-minded people are creating more exciting story, like what they have done in Hollywood. Okay, my personal, I wish to report you my personal experience. And the first visit of me in Pakistan is happening in 2015. By that time, I stay in Islamabad, Marriott Hotel, and unfortunately, I experienced more than 20 times the power failure in a 5-star hotel by that time. But now, this problem no more anymore. Oh, and okay. all this because of the CPEC, because of the infrastructure, because of the power plant invested by China. Okay. And together with our partners from Middle East and also of our Pakistan partner. And now I'm happy you're mentioning about Gwadar. You know, to develop Gwadar into a prosperity, peaceful place is a dream of many generations. And but unfortunately, you know, this port was developed starting from 2000 years until 2015. And up to 2015, there's no progress at all. Yeah. And the dream to develop Gwadar as a prosperous harbor is something impossible by that time. Okay. And by that time, we jumped in, and for the past 3 years, only CPEC, we have invested more than $50 million into the renovation of the port. And okay, so in last 2 years, you mean the work is more rapid than the couple of previous years? Yeah, and more than $100 million for the free zone development. Oh. And many of them have never been in Gwadar before. And you know that if you visited Gwadar, you see the airport, new international airport, which is the longest runway in Pakistan, is under construction. How long would that international airport take? 3,700 meters. That will be big enough to accommodate 380. Okay, so this is going to be a quantity, right? Yeah. Like how long would that construction take? Like maybe a year, 2 years? How long? Maybe within next year. Within next year, the airport would complete. We're expecting 380 will be landed in Gwadar. Okay. And this airport is under construction. The vocational training institute is under construction. Vocational Training Institute is also under construction? Yeah, under construction. Okay, so Vocational Training Institute, here I need to clarify my viewers that vocational training centers are that which Prime Minister Imran Khan also spoke about, because vocational training centers are really important for the growth. हमारी growth के लिए इस तरीके से ज़रूरी है. नाज़रीन को अगर मैं आप बताऊं, क्योंकि जो लोग जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, अपनी एज से वो एक्सीड कर गए, अब वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद होंगे. और ये पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप, ये बायलैटरल टाइज जो हमारे हैं, इस वजह से मुमकिन हो सकेगा. So we're telling us about the vocational training institutes, that how much you have invested into that project. For you know that totally all these projects are Chinese government guaranteed project. Okay. It's not a loan. It's not loan. So this is amazing. It's a totally grant. Chinese government has provided more than 5 billion grant for Gwadar only, including the airport, working training institute, 300-bed hospital, East Bay Expressway, destination plant, as well as a power plant. So I can see now, you know that Gwadar now is very hot, and you can see many investors are doing their business there. And 5 years ago, there's nothing at all in Gwadar, and now you see a lot of new buildings, beautiful villas are so the construction is a little rapid. Like swim room after rainfall. So we are very happy for this achievement. And talking about the media, you see, I mentioned that you are very polite, you are very gentle, and you are saying that they're misleading. As a matter of fact, they're making up some stories which does not exist at all. You know, like we have a very beautiful camp and a very famous
international magazine, very reputable media. They think this camp is a Chinese base, military base. Okay. I'm very surprised. I'm very shocked. How can the very reputable media to make such kind of story? But what I'm trying to But at the moment, media is not reporting these issues. It's just generating from social media. Yeah, social and media. obviously, Yeah. the countries which are insecure from Pakistan and the growth of Pakistan and China. Yeah. So they're just reporting it. Unfortunately, some of the people are also talking about it on media media. is supporting. Yeah. But if you talking about social media, Yes. But especially Yeah. Indian and other people, they are doing propaganda against Yes. Pakistan and China. Yes. well, you know that there are many interesting stories. I will not because of time. I will not Yeah. list the one by one. Yeah. But what I can tell you, my Pakistan friend, that the Chinese are very focused on CPEC development. Nothing will stop us to continue the cooperation. Nothing will stop us, inshallah. Nothing will stop the Yeah. CPEC development, and we will not be diverted by such kind of media. Inshallah. Yeah. And by the way, I wish to take this chance to express my greatest appreciation for the media people, for the social media, including your estimate organization. And 98% of the media are still favor to us, and just very minors. But this minor media will not divert. We don't bother about it. We don't bother. Okay, perfect. So जिस तरीके से शहजाद सर बता रहे हैं कि ये सारे रूमर्स हैं और इसमें कोई सदाकत नहीं है. पिछले 2 साल में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या बाकी मामलात के ऊपर हो. और इसके ऊपर मज़ीद आप क्या ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक और बात उन्होंने की वो बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं कि ज़बरदस्त थी कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर इन्होंने जो इन्वेस्ट किया, इट्स नॉट अ लोन, इट्स जस्ट अ कॉपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, और चाइना होल सोल वो पूरा लगा रही है. लेकिन इसके ऊपर आप थोड़ा सा अपना रिव्यू बताएं. मजीद मैं बाकी सवाल करूंगी. और यहाँ पर मैं प्रोग्राम में सरदार शौकत पोपुलज़ई साहब ने भी ज्वाइन किया है, सदर हैं बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं. जी शहजाद. देखिए, मैं एक चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ऑब्वियसली अब चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का भी प्लान बनाया, CPEC आया, तो यहाँ के लोगों को भी हमें ट्रेन करना था ना. कि आपने देखा कि जिस तरह मैंने आपको बताया ML1 है, तो कराची टू पेशावर, और ये पूरी छोटी नहीं है, ये तकरीबन आप ये समझ लें 1872 किलोमीटर है. और इसके अलावा जो आपके हाईवेज हैं, नेटवर्क हैं, ये सारी चीज़ें हैं. और बलूचिस्तान आपको पता है इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है. और गवादर जो पोर्ट आपको पता है वो मेजर रोल प्ले करता है. और अब जाके गवादर ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से हुआ है. उससे पहले इसमें शहजाद कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि देखें ऑलरेडी चाइना भी उसके ऊपर बलूचिस्तान के ऊपर ग्वादर के ऊपर इन्वेस्ट कर चुका है. एक अपनी तरफ से एक गुड जेस्चर, पॉजिटिव जेस्चर. अवाम, वहाँ की जो अवाम में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वो नहीं है ज़ाहिर है इतने ज़्यादा स्टेबल, लेकिन अब वो कब तक उनको पैसा देते रहेंगे, जो कि ऑलरेडी लोन नहीं है, सपोर्ट थी, लेकिन फिर भी उनको काबिल होना पड़ेगा. आपको क्या लगता है, क्या हमारे लोगों में चेंज आ पाएगा और कौन लेकर आएगा? क्योंकि वोकेशनल में तो बना देंगे लोग, लेकिन who, you know, would they be willing to work or something? देखिए, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है जो इन्होंने ये चीज़ का, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, स्कूल्स बनेंगे, रोड्स बन रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं. ऑब्वियसली वहाँ पर हालात में बेहतरी आएगी. जब आप एक चीज़ है ही नहीं है शहर में या एक सूबे में, वो चीज़ ना हो, तो ऑब्वियसली आप आवाम से वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते. इंशाल्लाह जब इस तरह की चेंजेस होंगी और वहाँ पर जो वहाँ के मकामी लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, देखिए मैं इस टेलीविजन के तवज्जो से मैं ये पॉइंट को यहाँ भी रेज करूँगा कि वहाँ के मकामी लोगों को भी वहाँ पर जॉब्स दी जाएँ. और उनको जिस तरह से आपने कहा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो इनमें इनको ट्रेन करके और उनको फिर वहाँ जॉब्स दी जाएँ. जैसे कि मैंने ML1 का जिक्र किया, इसमें 1,50,000 जॉब्स क्रिएट होंगी. इसी तरह जहाँ से जो भी ये काम हो रहा है, क्योंकि देखें CPEC सिर्फ गवादर टू कराची नहीं है, इट्स अबाउट द रीजन. इट्स अबाउट द रीजन. यहाँ से निकल के आप इसको आप श्रीलंका तक
आगे तक बातचीत जा रही है, तो उसमें ऑब्वियसली पंजाब का भी कुछ एरिया आता है, केपीके का भी कुछ एरिया है, बलोचिस्तान भी है, कराची पे आप ये देख लेंगे, जो मुझे था, हो सकता है मैं गलत हूं तो ये मेरे सीनियर हैं, हो सकता है मुझे कह लें, केसीआर को भी शामिल किया जा रहा है सीपैक के उसमें, कि ताकि वो वहां से इन्वेस्टमेंट हो, ताकि इस वक्त कराची की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि गवादर से आप कराची, क्योंकि कराची पोर्ट की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, चीजें हैं, तो इसी तरह गवादर से ऑपरेशनल ऑलरेडी वही है, लेकिन गवादर भी देखिए हो चुका है, लेकिन ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। अब प्रोपेगेंडा करने वाले करते हैं, सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है वो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं बोलेगा। हम पॉलिटिकल बाइसेस अलग कर दें, मैं पीटीआई को, पीटीआई को भी अभी साइड पे कर दें ना, ये पीटीआई we have to realize what's our national interest, what to say and how to speak on sensitive areas, because if it's about national interest we have to be, you know, really mature on the topic ना, हम इस तरह से इसको खुदा ना खासा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे और सीपैक जितना आगे बढ़ेगा पाकिस्तान उतना तरक्की करेगा, पाकिस्तान उतना तरक्की करेगा इंशाल्लाह, और पूरे खित्ते के लिए बेहतर होगा। पोपुलज़ई साहब, आप क्या इसमें ऐड करना चाहेंगे? वैसे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ इस वक्त कि ओवरऑल पाकिस्तान और चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप कितना सेटिस्फाइड है कि फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त सिमत में चल रही है? It's very simple. If you allow me, I would like to speak in English. Oh, it's better. So that yeah. we can understand, Yes. and people can understand too. Yes. You can see, you can judge from the bilateral relationship that Pakistan has gained $62 billion of a CPEC project, which is the flagship project of Belt and Road Initiative. So obviously, the whole world knows that we are the winners, and our bilateral relationship are progressing every day. And that's where the jealousy, international jealousy starts. Like you were saying, the international propaganda, the social media propaganda. Truthfully, being a mature nation, we don't care for that. Whatever world says, we don't care. The realities the unfortunate thing is some of the people from opposition parties at the moment, they criticize it for the sake of criticism. They have to criticize PTI, so whatever they think, they do that. That's it. That's point scoring. But we have to realize it's high time we have to be mature on that. Let me be very frank and not politicizing this issue. I doubt if any political party is against this project. Frankly, bluntly saying, no, I sir, deal but with for but I yes. doubt if any political party. In the beginning, they were, I don't want to name them. There Yes. are two major political parties where I had to go and even beg to their beard that don't do that. It's in our national interest. And they realized. And now, I know they may be fighting with the PTI, but not with the national interest. So today even Khakan Abbasi and the leadership from Pakistan Muslim League Noon, they were talking about their cases, and immediately they dragged CPEC into that, and they questioned the overall situation over there. So time to time, Pakistan Muslim League Noon, or maybe at some point People's Party also, you know, jumped into the situation where maybe they want to do a point scoring, but that damaged national interest of the country. But frankly telling you, even if they want to take political mileage, if I know the economics, I wouldn't care for that. Whosoever, whichever party it is, there's PTI, PMLN, whichever party is, I would not care for that. My national interest is prime. If People's Republic of China is my friend and looking after my national interest, they are on my head, they are on my shoulders. So I will never be against them. And same I advise to all the political parties not to play with this national interest project. You know, this is in our national interest. Now coming down to CPEC, this was just a feed on the bilateral relation between our two countries. I must congratulate that China is celebrating its almost 72 years of founding of the country, and 71 years relationship between our bilateral relationship, which is a big achievement. So we are not friends, we are brothers, and I don't want to quote which normally the politicians or Prime Minister quotes about that, higher than mountains and... I've already quoted that into my introduction. So I don't want to quote, frankly telling you, whosoever, if it pains somebody, I don't mind, but CPEC is progressing like anything. CPEC is future of this country. It's the future of the region. CPEC is future of People's Republic of China,
It's a flagship project of Belt and Road Initiative. Inshallah, it is going to be a very successful project. Yeah. Inshallah. Okay, Populzai, sir, I just want to know another question, but before that I have to go on break because my producer is constantly asking me for the break. I need to know that here China is actually, more into trade with us, progressing projects. China is into a lot of projects apart from OBOR, Silk Road, and the whole Gwadar Port. The project which we were talking about, the vocational training centers, it's a gift from China to us. It's not the aid, it's not the loan. What do you say about that? And do you believe that people would start learning and there would be change in people, or that will take time? I need to know the answer after a short break. Stay with us on Inside the News. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल जो चाइना और पाकिस्तान की कॉपरेशन से क्या फ़वाइद हैं, CPEC, OBOR के बारे में हमने बात की। मैं सवाल छोड़कर गई थी सरदार शौकत पोपलजई साहब के लिए कि क्या समझते हैं वो जो TVET स्कूल्स हैं जो फॉर्म होने जाएंगे ग्वादर में, जो कि चाइना की तरफ से तोहफा है पाकिस्तान को, क्या बलूचिस्तान की आवाम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को यूटिलाइज़ करके अपना हुनर सीख पाएगी, और क्या वो वाकई होंगे काम करने की? क्योंकि चाइना ने हमें एड नहीं दिया, चाइना ने हमें लोन नहीं दिया, ये चाइना की तरफ से तोहफा है, हमारे लिए गिफ्ट है। तो क्या इस गिफ्ट को हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे या नहीं? यस सर, योर व्यू ऑन दैट। बहुत शुक्रिया अलवीना। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द फर्स्ट फेज ऑफ CPEC is almost complete. The energy projects are about to end, they're progressing. Infrastructure has been built, lot of roads are coming up, a lot of other whatever you need. The economic free zones are coming to. Now this is something very important which I am going to advise to PTI and the opposition parties, that they must understand that it is the time for private sector to take initiative. So China has given us a lot of money. We must respect their regardfulness, whatever they have done for us. So our private sector has to take initiative. I would request that it's not enough that real estate development is required in Gwadar. How many avenues? I want to know how many avenues are open after this Gwadar Port, but before that you have to comment on that vocational training institute. Well, vocational training is the foremost for any part of this country. It's not Balochistan. It's everywhere. But Balochistan, since our population has meager 13 million, so vocational training is going to help us a lot, particularly the population in Gwadar. But would we be able to convince the mindset and ask people that come here, it's employment for you, that's going to change your life, and it's best for you? Would we be able to change their mindset? So here where the politician comes, so you have to convince the MPAs, MNAs. Okay, they have Shahzad, to afford time, and they have to, we have to hammerhead them that they have to come forward and do it. Now, since yesterday I was looking for that answer, and I constantly brainstormed that how can we produce that, how can we do that? But again, the simple answer is that politicians have to go and counsel people over there. They have to tell them like what to do and what not. Under poverty, the Balochistan South direly needs economic development. Okay. So Gwadar can give boost to this area, livestock, agriculture, date processing, camel breeding, all these areas. It's across the border in Iran and across here in Balochistan. Okay. So here like the federal and provincial governments, they have to intervene. They have to create. I think they are on the same page. Provincial government and federal no, government. but the point is privatization has to grow, and the private industries Obviously, have private to take. sector तो हमेशा से एक important part play करता है. और he's right. कि आपको लेकिन वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करके ताकि कुछ डेवलप करें, कुछ चीजों के ऊपर काम करें, उसकी जरूरत है ना. As a businessman, I'm also a businessman. Businessman को. I fully agree with Brother Sardar. Yeah. And despite of COVID-19, okay, all the major projects really are experiencing difficulties. But I'm happy to inform you that in Gwadar, it's two projects. One is the vocational training institute. And I'm happy to inform you, the completion date will be anticipated at least 5 months. At least 6 months. So it's a good news in the next 5-6 months. Are suspended. Okay. But we know the importance of this vocational training institute. Okay. And the contractor is doing work day and night. And they
just before coming here, they told me that we can complete this project ahead of schedule at minimum 5 months. Okay. And just now you made a very good question. That is whether the people will go to attend Yes. this vocational training institute. But I'm happy to inform you that many people already sent their application Okay. to join this vocational training institute, because we assure them once you're qualified to be You get the operator, employment. to be a technician, then you will get a job immediately. Yeah. So we don't worry about the candidate or about the training. The future of this vocational training Yeah. institute. The major issue, we should offer professional training and then offer them a job. This is very critical. Okay, so Zhang Baozhang, so at the moment, which avenues you believe are just immediately going to open, like after 5-6 months, the vocational training center would be ready, and how many more avenues would be open because of that CPEC? Oh, well, in Gwadar, there are many, as a matter of fact, there are many workshops. Like we have one very modern, we call it plant tissue culture laboratory. The construction already completed, and one steel pipe plant already completed, and one edible oil plant is almost completed, and one garment factory already completed. Okay. So we need a huge amount of qualified staff. So don't worry about the job. We worry about the qualified technician. We worry about the technical staff, whether they can do the job or not. That's why we propose this vocational training institute. I believe we have a big future. And another good news I want to report to you is that the Fakua College School, with the guidance of Sardar Populzai, that you know that before that school we selected in a very poor area, we call it the Fakua Colony. There's no school at all. And so we persuade one China NGO, China Peace and Development Organization, to donate about $1 million to set up the school. And at the beginning, we worried whether we will get students or not. I'm really, by that time, we spent $1 million, but if no students come, it will be a shame for us. But to my surprise, only with the operation of 2 years, instead of 150 students, which is the design capacity, we get 700 students. Okay, so you got the so positive response. Just within 2 years. Okay, so this is what something new. And then when China Peace and Development as a donor, they are very happy. So they immediately put another $1 million to this school. And I'm happy to tell you, despite the COVID-19, this new extension building already completed within 5 months. You cannot imagine the schedule. People are working day and night in Gwadar, despite of COVID-19. Okay, despite of COVID-19. Shahzad, here Zhang Baozhang told us about the different avenues being created in GWADAR Port. What do you believe, like in Pakistan Tehreek-e-Insaf government, what things you believe are going to be more rapidly in that GWADAR Port? Obviously, जो सबसे easy sector होता है, if you see CPEC, उसमें रियल एस्टेट सेक्टर जिस जगह से वो रोड गुजरेगी, हाईवेज हैं, नेटवर्क हैं, ओवरऑल जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, इंशाल्लाह यू विल सी आफ्टर 4 or 5 years यहाँ से पूरा लोड शेडिंग का खात्मा होगा, क्योंकि आपने देखा पावर सेक्टर पे किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। और आज जो सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ रियल एस्टेट सेक्टर, एक ज़माने में गवादर एकदम से बूस्ट कर गया था, और अब जाके फिर गवादर की पोजीशन बेहतर होने जा रही है, और ओवरऑल इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि कराची टू पेशावर, इफ़ आई एम गोइंग टू पेशावर, और अगर मैं 7 to 8 hours में पहुंच जाता हूँ, तो इससे ज़्यादा कामयाबी और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी। पेशावर से कराची आने वालों को ईजी होगा, उसके बीच में सारे जो आपके नेटवर्क है वो मजबूत होगा, और ऑब्वियसली बिजनेस आपका इंक्रीज होगा। बिजनेस देखें, दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन और उसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन पूरा सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और आप CPEC में देखें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
इसी पे काम हो रहा है। Okay, चाहे okay, वो हाईवेज हो, Shahzad, नेटवर्क हो, सारी चीजें हो। here's the another thing, जिसको लोग क्रिटिसाइज, जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग थे, यही कह रहे थे बार बार कि चाइना के अपने लेबर्स हैं। हालांकि यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि वंस द वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज देयर, तो लोकल्स को ट्रेन करें, लोकल्स को एम्पावर करें। जितने चाइनीज लेबर होंगे उतने ही पाकिस्तानी लेबर्स भी होंगे। सो इट्स अ बोथ वे, इट्स नॉट अ सिंगल बेनिफिट, इट्स अ बोथ वे थिंग। तो ये मिसकंसेप्शन भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है, और ऑलरेडी पाकिस्तानी लेबर्स भी मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। कोई भी कंपनी आती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ के फॉरेन लोगों को तो हायर नहीं कर रहे, फॉरेन हायर कर लिया, रेशो फॉरेन का कम होता है और लोकल उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लोकल को इन्वॉल्व करते हैं, इनको ट्रेन करते हैं, और आफ्टर सम टाइम फिर ये होता है कि उनसे कहा जाता है कि अब लोकल, क्योंकि इनके लिए भी ईजी नहीं है कि बाहर से क्या लेकर आए, ऑब्वियसली दे आर पेइंग हाई। तो यही कहेंगे कि हमें जो रिसोर्स है वो वहीं से मिल जाए, ह्यूमन रिसोर्स के वहीं से मिल जाए, उसी पे इन्वेस्टमेंट करें और उन्हीं को हम हायर कर लें। तो आई थिंक इनके फ्यूचर प्लान यही है कि जिस तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बन रहे हैं, तो इन फ्यूचर आप देखोगे कि यहीं से लोग हायर होंगे, यहीं के लोग ट्रेन होंगे, और यही इस मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो बहुत क्लैरिटी है हमें, रूट्स के बारे में, मोटरवेज के बारे में, ऑन एयर भी हमें मालूम हुआ कि कहाँ कहाँ काम हो रहा है। मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होगा, पावर सेक्टर के ऊपर भी काम हो रहा है। क्या आपको लगता है टूरिज्म के ऊपर भी बहुत बेहतरीन काम होगा? क्योंकि वी हैव हर्ड कि टूरिज्म पर होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना इस हवाले से जो है सीरियस? खान साहब की दो चीज़ों पर तो बहुत ज़्यादा फोकस है, टूरिज्म, एक आपका एनवायरनमेंट। आप देख लें केपीके में भी जो हमारी गवर्नमेंट थी, 1 बिलियन ट्री का पूरा मंसूबा शुरू हुआ, वो उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। लेकिन उसके अलावा आप देख लें, अभी भी आप कितने सालों से आप देख रही हैं टूरिज्म केपीके के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किस कदर तेजी से बढ़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आपका रूट ईजी हो जाएगा, आज मैं कोयटा जाने का सोचता हूँ, मुझे सोचता हूँ 12 घंटे 14 घंटे लगेंगे, इट टेक्स एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स, और वही अगर रास्ता 6 घंटे का हो जाता है तो ऑब्वियसली मुझे जाने में कोई एतराज नहीं होगा। इसी तरह मैं कराची तो पेशावर मैंने आपको जिक्र किया, फिर लाहौर है जो मुझे पता लगा है कि अभी जो मोटरवे इंशाल्लाह बिटवीन सक्खर और हैदराबाद बन जाता है तो लाहौर आप 8 से 10 घंटे में लाहौर पहुंचते हैं आप। तो 8 से 10 घंटे में अगर आप लाहौर पहुंच रहे हैं, ऑब्वियसली आपको बिजनेसमैन के लिए भी आसानी होगी, सिर्फ घूमने फिरने वालों के लिए नहीं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कितना ईज हो जाएगा कि उन्होंने सोचा है उनको वो प्लेन में जाना है, वो उस तरह से एक्सपेंसिव होगा, यहाँ गाड़ी में and already airport is also under construction, so this is again the USP. Populzai sahab, what are you going to say on that tourism, because the airport is under construction, the roads are going to be, we are seeing the motorways connection, how the GWADAR Port is connecting different provinces together, how it's connecting a region. So how do you see tourism? Well, before saying that, I must say that we must match Pakistan, province of Balochistan, we must match the initiative of China. Now it's time for us that we should join and give our input. So we cannot depend on all the time they give China. Us grants and we feel happy about that. The most important thing is my brother... I had to ask this question, but I just skipped it. My brother has not spelled out, but I know this personally, that since last many years, China is giving lot of support to the local population, in the shape of solar systems, in the shape of fishing boat engines. They have given a lot of support. That's why people now, they have changed their perception in Gwadar. Now if you visit the coast of Balochistan, people have different minds about the People's Republic of China. So we must, the federal government and provincial government must match their efforts. We should initiative, like my brother said about the real estate. Real estate is secondary. The first thing is what they have done is vocational training. We must prepare our human resource to get prepared for modernization of industry. Second is tourism. I fully agree with you. But tourism not at the cost of local people. Because if you bring tourism and you bring international projects and our population remains at the same level, no. I would request PTI, my brother, please at least build Karachi-Quetta road. At least we can reach Quetta in 8 hours. So this is most important, which sometimes federal government ignores it. I already said, if I'm going to Quetta from Karachi, I think maximum 6 to 8 hours, it's ideally. Otherwise, if I'm going by road or by bus, it takes 10 to 12 hours, even 14 hours by bus. Okay. It's not that
But again, the question is same which Populzai said. It is that the provincial government and federal government they need to make an ally, and they need to promote tourism regarding that. We cannot rely on everything on China regarding that. So tourism, as Prime Minister Also Imran private Khan sector always speaks about. Yes. Also private sector. But again, the private sector is secondary, right? In the No, How do you believe? Let me tell you, the potential is there. Let's not precisely say that tourism. I talk of whole economics. Okay. We talk of fisheries, we talk of industry, we talk And yes, fisheries. If we talk about fisheries, like Dubai was just based, it was actually a small village and based on only fishing. And we see Dubai something really huge, and Gwadar can be a second Dubai, maybe bigger than Dubai, just because of the strategic Yes, of location. course. This is what our brother said about the Aqua, this institute. So the most important thing is that we must understand that we must match. The provincial government should take initiative. Yeah. Under 18th Amendment devolution, the provincial government has more to do rather than I blame the federal government. I'm not blaming, I'm not criticizing, but it is now right time that they should put their input. But who will question Balochistan government over that? Because I will question it. Okay, Being a common, I don't mind questioning it. You Why have to should not? question Balochistan government on that. So what do you have to say on that? So like we talked about different avenues being created through CPEC, OBOR and a GWADAR Port basically. How do you see overall this situation? Thank you, madam. And to be honest, I'm very confident and I'm very satisfied of my work in Gwadar. I have been working in more than 50 countries. Maybe you don't believe, but I have been working in more than 50 countries, including Europe, Africa, North America, and Asia. But I really love Pakistan. I take Pakistan as my second home. Yeah. Not And you look good in shalwar kameez. Amazing at I'm that. local. they call me Especially in Balochistan. Zhang Balochi. Okay. But you know that the people, the Gwadar people, Balochi people, are very nice people. They deserve good life. Yeah. They deserve. They good had been education. deprived of the system, Yeah. of the tribal system. Yeah. But they are very good people. Peace-loving, humble, Not only hardworking, tribal system. and easy to. सरदारों ने get it रॉयल्टी ले ली हर दफा प्रोविंस से स्टेट से और फिर कुछ Yeah, किया just now you mentioned about tourism. Yeah. I'm sure you know what happens in China. Starting from October the 1st until 10th, we have 10 days holiday. You know, one day, how much is the government collect? 60 billion. 60 billion In one day. one The day. revenue. देख लें टूरिज्म Yeah, में it's इतना just फायदा है tourism. एक दिन में. But you know that we have to create the climate, the Now environment for tourists. KPK and Yeah. Gilgit-Baltistan, they are doing very well. And in Pakistan, especially in Balochistan, you have a unique culture, sentimental song, beautiful sceneries, Yeah. a lot of local products. These are the blessing from Allah, and it should be developed. We Yeah. should utilize it. Yeah, exactly, perfect. As Zhang Baozhang said that from Allah, Pakistan had been blessed, and you guys have to maybe if federal government is not directly investing it into that, but you can question provincial government on that. Like when they talk about their rights, now this is high time that they pay attention to Gwadar. सर मैं यहाँ पर कुछ एक चीज़ ये कहना चाहूँगा. आफ्टर 18 अमेंडमेंट ही इज राइट के प्रोविंशियल सारा सेगमेंट आ जाता Autonomy है, मौजूद आ है, जी. जाती है, फेडरल का वो रोल नहीं रहता. बट यार इन चीज़ों से हमें अब निकल के प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें आना चाहिए. जैसे मैंने आपसे कहा ना, तो प्राइवेट फिर आप सेक्टर लोग ले आए उनको, उन्हीं को ले आए. करना तो कुछ पड़ेगा उनके कुछ साथ ना कुछ. कुछ काम करें. जो फेडरल अथॉरिटी वाले एरियाज हैं वहाँ हमें लाना चाहिए. इसी तरह आपका जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उसको भी लाना चाहिए. प्राइवेट सेक्टर जब तक नहीं आएगा, इनकी बात एक हद तक बिल्कुल सही है कि रियल एस्टेट को आप जितना भी कर लेंगे, प्राइवेट सेक्टर जब तक आके वहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं होगी, उस वक्त तक आप भूल जाएंगे बलूचिस्तान या गवादर में कोई चेंज आएगा. तो उसका मैं समझता हूँ पहला स्टेप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. ये चल रहे हैं सारी चीज़ें. अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है. मैं खुद देखता हूँ क्योंकि बेसिकली आई एम फ्रॉम रियल एस्टेट सेक्टर, तो बहुत लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गवादर में, ओवरऑल बलूचिस्तान में कर रहे हैं. तो आप ये देखिएगा इंशाल्लाह you will see after 5 years कि बहुत हद तक चेंज आएगा. Populzai, we are going on closing. Anything you want to add? Yeah, I want to add some very important aspect is that in any part of the world, the economic development depends on the banking system.
So State Bank of Pakistan has literally failed in looking after the potential of Balochistan, particularly Gwadar. Okay. The banks have nothing to offer. Okay. Even a person wants to have a motorbike loan, they would never give it in Balochistan. Okay. At one time, the ADR, advance to deposit ratio, in State Bank of Pakistan was meager 5%, which was literally a joke. I have been telling the authorities in State Bank of Pakistan to look after Balochistan. We are making policy. Here comes the federal government who has to intervene. The Prime Minister has to intervene. The Finance Minister has to intervene. And the Chief Minister of Balochistan has to intervene. So they have to intervene in the interest of national interest. Okay. Sir, anything you want to add? One-liner. I'm very happy that in the past 2 years I have experienced a huge development in social sector, economical sector, and I'm happy to report you that the GWADAR Port is starting its competition. You know, just 2 months ago we started the first Afghanistan transit cargo. Honorable PM tweeted himself. It's the first time in the history of Pakistan that the fertilizer are bagged in Pakistan and then shipped to Afghanistan. Okay. And just through this activity, thousands of jobs have been created, and the local logistic company are very busy. Okay. You can see this is the potential. Before this bagging, fertilizer bagging are in Dubai or in some other port. This is the first time. You can see the competition, the advantage is already there. And we are very confident about the future of Gwadar, and we are very grateful for the assistance offered by Ministry of Command, Ministry of Marine, and the local public. Okay, perfect. Quickly, Shahzad, one-liner. कुछ ऐड करना मैं चाहेंगे? ये कहूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इसको आप इसको जो है ये रखें और इसको point scoring ना करें. इसको point scoring Okay, ना thank you so much for joining us in the program, Shahzad Quereshi MPA Pakistan Tehreek-e-Insaf, and Sardar Shaukat Populzai Sahab. Thank you for joining us as the president from Balochistan Economic Forum, and thank you so much Zhang Baozhang, chairman COPH in Gwadar. We're going to conclude with a few points. The points are like federal